most awaited time of the year, Ganesh Chaturthi is finally here. ये वाइब्रेंट हिंदू फेस्टिवल जिसे विनायक चतुर्थी या गणेश उत्सव भी कहा जाता है, सेलिब्रेट्स द बर्थ ऑफ लॉर्ड गणेशा. This 10-day celebration is marked with immense enthusiasm and devotion by Hindus around the world, especially in India. Lord Ganesha, जिन्हें गजानन, धूम्रकेतु, एकदंत, वक्रतुंड और सिद्धि विनायक जैसे नामों से भी जाना जाता है, is honored as the deity of wisdom, prosperity and good fortune. The grand festival kicks off on the 4th day or Chaturthi of the Hindu month of Bhadrapad, which usually falls between August and September. इस फेस्टिवल के दौरान लोग गणेश जी की आइडल्स को घरों, मंदिरों और वाइब्रेंट पंडाल्स में स्थापित करते हैं, जहां पर इनकी पूजा की जाती है थ्रू वेरियस रिचुअल्स एंड सेरेमनीज. इस साल गणेश चतुर्थी विल किक ऑफ ऑन सैटरडे September 7th and will wrap up with Ganesh Visarjan on Tuesday, that is September 17th. Meanwhile, the Madhyana Ganesh Puja Muhurat, which is a highly favorable period, begins at 11:03 am and extends until 1:34 pm, spanning 2 hours and 31 minutes. Well, जिन्हें नहीं पता उनको बता दूं कि गणेश चतुर्थी का origin dates back to the 17th century during the Maratha Empire, when Chhatrapati Shivaji Maharaj used it to foster nationalism and unity. However, ये फेस्टिवल वाइडली पॉपुलर हुआ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, जब फ्रीडम फाइटर लोकमान्य तिलक यूज्ड इट टू यूनाइट पीपल एंड मोटिवेट देम टू फाइट फॉर इंडिपेंडेंस. वेल, गणेश चतुर्थी होल्ड्स एन इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस इन हिंदू कल्चर एंड स्पिरिचुअलिटी. हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार माँ पार्वती ने गणेश जी को सैंडलवुड पेस्ट से बनाया था. गॉडेस पार्वती लेफ्ट लॉर्ड गणेशा टू गार्ड द प्लेस while she was taking a bath. When Lord Shiva came by and found Ganesha blocking his way, he did not know who he was and ended up getting really angry. Lord Shiva accidentally severed Ganesha's head. ये देखते ही माता पार्वती काफी गुस्सा हो गई और उन्होंने दुनिया का विनाश करने का प्रण ले लिया. To make things right, Lord Shiva sent his followers to bring back the head of a child. They returned with the head of a baby elephant, which was then placed on Ganesha's body. और इसी वजह से Lord Ganesha has the head of an elephant. Well, all over India हर साल गणेश चतुर्थी को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, but it's specially grand in Maharashtra, Telangana and Karnataka. In cities like Mumbai, Pune and Hyderabad, people bring home Ganesh idols for anywhere from a day and a half to 10 days. During the festival, people set up the Ganesha idol, pray, perform rituals, offer food and sometimes fast. It all ends with Ganesh Visarjan, जब उन idols को पानी में विसर्जित किया जाता है. It's a bittersweet moment as people say goodbye and hope for Ganesha to return next year. Ganesh Chaturthi is all about joy, community and devotion. The festival crosses all the boundaries, uniting people from diverse backgrounds, regardless of caste, creed or religion, to celebrate the divine presence of Lord Ganesha. Well, Midday की तरफ से आप सभी को a very happy गणेश चतुर्थी. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.